So a very good morning, students. So once again, I welcome you all for the online lecture series on the remote sensing and GIS. So this will be the lecture number 11 and the part 3 of the photogrammetry. So far we have divided this photogrammetry part. Photogrammetry is actually one of the unit of the remote sensing and GIS part. And what we have done, we have divided into part 1, part 2, and part 3. So in this photogrammetry, we'll just talk about the concept which we have not covered so far in the part 1 and part 2 and part 3. So till now we have covered, this is actually the recap of my previous lecture. So far we have covered aerial photogrammetry, geometry, and the vertical aerial photographs, high and low oblique aerial photographs, overlapping stereo photography, vertical versus aerial photography, then a scale, different scale. We have talked about the photo scale, reciprocal and photo scale factor. Then we have also seen the different numericals. Then we have seen the scale variation. What will be the variation if the focal length changes, decreases or increases. Then we have gone through the various numericals, okay, how to convert them. And then we have also seen average scale, nominal scale and point scale. And there were different scales, the conversion part also. Now the very important thing is we have to start with the vertical aerial photograph and the fiducial mark, right? So we'll convert it, we'll just talk about this aerial photograph fiducial mark. So we'll start the lecture from here. So let us have a look at this entire slide. So when remote sensing started, we started with the normal camera. ठीक है, जब हमारा remote sensing का process start हुआ, तो हमने उसकी starting normal camera से start करी. जब normal camera से start करी, you find old vertical aerial photograph, you will find there are several marks printed on the photograph. ठीक है, जब हम एक फोटोग्राफ को देखेंगे तो there were the several marks on the photograph. This I am talking with respect to the printed aerial photographs, right? And here we are talking about the fiducial mark. So optically projected geometric figures located either at the four corners or on the four sides of the photograph, and they are known as fiducial marks. The define the coordinate axis and the geometric centers of any individual aerial photograph. In general, x-axis defines the direction of the flight. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा x-axis है, it is the direction of the flight. The intersection of the fiducial mark represents the principal point of the photograph, right? So that is the center of your image by joining the fiducial mark. ठीक है, तो एक बार fiducial mark को फिर से समझने की कोशिश करेंगे. जब हमारा रिमोट सेंसिंग स्टार्ट किया गया तो ये स्टार्ट हुआ एक नॉर्मल कैमरा से. ठीक है, इफ यू फाइंड ओल्ड वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ, यू विल फाइंड देयर आर सेवरल मार्क्स प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ. ठीक है, जब हम पुराना वर्टिकल फोटोग्राफी देखते हैं तो उसमें वी कैन फाइंड सेवरल मार्क्स विच आर प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ. जो मैं इसकी बात कर रहा हूं ये है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंटेड एरियल फोटोग्राफ, राइट? एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिडुशियल मार्क. यहाँ हम किसकी बात करते हैं? फिडुशियल मार्क की. तो ऑप्टिकली प्रोजेक्टेड ज्योमेट्रिक फिगर्स लोकेटेड ईदर एट द फोर कॉर्नर्स और ऑन द फोर साइड्स ऑफ द फोटोग्राफ एंड दे आर नोन एज द फिडुशियल मार्क. तो फिडुशियल मार्क का मतलब क्या हुआ? फिडुशियल मार्क का मतलब ये हुआ ऑप्टिकली प्रोजेक्टेड geometric figures located at the four corners or on the four sides of the photograph and they are known as the fiducial mark. ठीक है, एक अगला स्लाइड अगर हम देखें तो the coordinate axis and the geometric centers of any individual aerial photograph, how we define, हमारे पास x axis में it defines the direction of the flight, right? In x axis we have direction of the flight. The intersection of the fiducial mark represent the principal point of the photograph, right?
So that is the center of your image by joining the fiducial mark. तो अगर हम सारे fiducial mark को join कर देते हैं, that will be your center of the image. ठीक है? Sorry, the center of your image by joining this fiducial mark. ठीक है? So if you join them, these are the fiducial marks. अगर हम इसको join कर दें तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा fiducial marks हो जाएगा. Now, if you join them, you will find your principal point lying somewhere in the center. ठीक है? अगर हम इन सभी को ज्वाइन करें तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ये जो आपका प्रिंसिपल पॉइंट है ये कहीं सेंटर में है यहाँ पे. ठीक है? The principal point here is at the somewhat at the center of the image, right? And in general, this defines the direction of the flight. और यही आपके फ्लाइट के डायरेक्शन को डिफाइन करता है, which is mentioned here. And this has been captured like this. If you see, this is your lens. अगर हमारे पास एक लेंस है, मैंने आपको राइट हैंड साइड में एक लेंस भी रिप्रेजेंट किया है. So this is your representation of the lens. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? If you see, this is your lens. This is the principal point. ये हमारे क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट्स है यहाँ पे कुछ. And these are the fiducial marks. और कुछ हमारे पास fiducial mark है. So sometimes you may find this kind of shape. Sometimes you will find some cross. Sometimes it will be like this, right? तो एक बार थोड़ा सा और आगे एक स्लाइड को चेक करते हैं fiducial marks से ही रिलेटेड. ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे if you see this photograph, these are basically fiducial marks. ठीक है? And it is very easy to locate on the image, and if you join them you will find the principal point. कैसे? नेक्स्ट इमेज में मैं दिखाता हूँ. मैंने सारे fiducial marks को ज्वाइन कर दिया और हमको वहां पे ये एक एग्जाम्पल है जहां पे मैंने सारे fiducial mark को ज्वाइन किया, and this is representing your principal point, right? So it is very important to note that when you are joining the opposite corner fiducial mark and the center, when they are crossing each other, that point is known as principal point. तो principal, यहाँ से एक definition ये निकल के आएगा कि हम principal point किसको कहेंगे. Principal point का मतलब ये है कि when you are joining the opposite corner fiducial mark and the center where they are crossing each other, that point is known as principal point. So एक बार मैं आपको दिखाता हूँ. So in image basically it will look like this, right? So principal point is the what it is? It is the geometric center of the photograph. ठीक है? तो principal point is the geometric center of the photograph. तो एक अगर हम definition निकालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि principal point जो है वो है आपका geometric center of the photograph and the intersection of x y axis और fiducial mark. या तो intersection किसका है? x या y axis का या तो fiducial mark का. तो principal point is the geometric center of the photograph and the intersection of the x and y axis और the fiducial mark. ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे principal point. ठीक है? So it is very important that you should also identify the principal point in your photograph. Less distortion is the radial. Less distortion is the radial from the principal point. So less distortion will be minimum as principal point at principal point. So हमारा principal point पे less distortion भी क्या होगा? वो कम हो जाएगा. And as you go away, your less distortion will be more. एक और स्लाइड पे हम चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं एरियल फोटोग्राफी में नादर का. नादर, what is defined by the नादर? So let us see whether this principal point in nadir where they are same or different. So in a oblique photograph your principal point will be somewhere else. In a vertical photograph your principal point will be somewhere else for the same area. So it is definitely the different points on your image. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो principal point है और जो नादिर है वो different है. कैसे?
कि अगर हम ऑब्लिक फोटोग्राफ है, योर प्रिंसिपल पॉइंट विल बी समवेयर एल्स, इन अ वर्टिकल फोटोग्राफ योर प्रिंसिपल पॉइंट विल बी समवेयर एल्स फॉर द सेम एरिया. So it is definitely the different points on your image. So nadir, what is nadir? Nadir is the point vertically beneath the camera. ठीक है, कैमरा के जस्ट नीचे वाले पॉइंट को हम नादिर पॉइंट कहते हैं. ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ फोटोग्राफ, राइट, एंड हियर इफ यू सी दिस इज द नादिर पॉइंट, so they are definitely different from each other, right? And topographic displacement is the radial from the nadir. So topographic displacement will be very less at nadir. As you go away of the nadir, you will find more topographic displacement. So what is the nadir point and what is the principal point? Both are actually the different point for the same photograph. Nadir is basically the point vertically beneath the camera during the acquisition of photograph. Okay, and here if you see this is the nadir point, so they are definitely different from each other, right? And topographic displacement is radial from the nadir. So topographic displacement will be very less at the nadir. As you go away of the nadir, you will find more topographic displacement. ठीक है, तो ये दो चीज डिफरेंट है. प्रिंसिपल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट क्या है? इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ. ठीक है, फोटोग्राफ का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल पॉइंट, और इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ द फिड्यूशियल मार्क. देखो, बात समझने की कोशिश करो इस दोनों स्लाइड से. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर है फोटोग्राफ का वो हो गया प्रिंसिपल पॉइंट, और एक्स और वाई एक्सिस का फिड्यूशियल मार्क्स का जो इंटरसेक्शन है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल पॉइंट. लेकिन जब हम नादिर में चले गए तो इट इज द पॉइंट विच इज वर्टिकली बिनीथ द कैमरा. कैमरा के नीचे वाला बिनीथ द कैमरा, इट इज द नादिर विच ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ द फोटोग्राफ. So this is actually the difference between the nadir point and the principal point of the aerial photograph. तो एरियल फोटोग्राफ के केस में हमारी तीन चीजें अभी तक हमने सीखी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला है फिड्यूशियल मार्क्स. ठीक है, पहली चीज है फिड्यूशियल मार्क्स. ठीक है, फिड्यूशियल मार्क्स मैंने बताया दे आर दी ऑप्टिकली projected geometric figures located either at the four corners or on the four sides of the photograph. ठीक है, they define the coordinate axis and the geometric center of any individual aerial photograph. In general, x defines the direction of flight and the intersection of the, और फिर फिड्यूशियल मार्क्स का जो इंटरसेक्शन है वही आपका हो जाता है प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ. ठीक है, अब अगला जो हमारा है वो है आइसो सेंटर. फिड्यूशियल मार्क्स हो गया, नादिर हो गया, अब हम जाएंगे आइसो सेंटर पे. तो आइसो सेंटर क्या है? आप फिगर में देखते जाओ, मैंने सेम फिगर में नादिर भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, पीपी भी प्रिंसिपल पॉइंट भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, और आइसो सेंटर भी प्रेजेंट कर रहा हूँ. एक नया टर्म आया आइसो सेंटर. So you have already seen this principal point in nadir. Now we have another point which is called isocenter. So isocenter is the point that falls on a line halfway between the principal point and the nadir, right? So where? Here. अब मैं दिखाता हूं आपको कहां पे है ये. देखो, हमारे पास एक एरियल फोटोग्राफ है, उस पे फिड्यूशियल मार्क्स यहाँ और यहाँ है. इनका इंटरसेक्शन कहाँ आ गया? ये हो गया आपका प्रिंसिपल पॉइंट, दैट इज पी. उसके बाद ये जो हमारा कैमरा है उसके बीनीथ, उसके जस्ट नीचे ये पॉइंट हमारा हो गया. कौन सा पॉइंट हो गया? इसको हमने कह दिया नादिर. ये हो गया हमारा नादिर पॉइंट. ठीक है, अब देखो, अब हमारा आइसोसेंटर कौन सा पॉइंट हुआ? दैट फॉल्स ऑन अ लाइन, ओके, हाफ वे बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द नादिर. अब प्रिंसिपल पॉइंट और नादिर के सबसे बीच का जो पॉइंट है उसी को हम कहते हैं आइसोसेंटर. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आइसोसेंटर. यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आइसोसेंटर क्या है.
नादिर क्या है और प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, राइट। एंड दिस इज एक्चुअली सी, अब क्या होता है कि the tilt displacement radiates from the isocenter. So now the tilt displacement will be minimum at isocenter. इसका मतलब जो tilt displacement है वो रेडिएट हो जाएगा आइसोसेंटर से। इसका मतलब कि वो आइसोसेंटर पे जो tilt displacement है हमारा वो क्या होगा, वो मिनिमम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे you go away you will find more tilt displacement. I hope you have understand the principal point. Now here basically we find the principal point for two different images. They are basically stereo pair. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा। सी, I hope that you have understand the principal point. Now here basically we find the principal point for two different images. They are basically stereo pair. So stereo pairs are like 60% overlap will be there. So in the first image you see this particular feature is coning here, okay, but in the next photograph it is coning here. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फोटोग्राफ में आपका it is coning somewhere here, and in this photograph it is coning somewhere here, right? It is coming here. So in the previous photograph this feature was here, in the next photograph it is coming somewhere else, right? So what we will do, we will start making the principal point on the first image. So here if you are marking this as a principal point by joining the fiducial mark, then the next image also you will find this principal point. Now where this principal point is coming in the next image, that you need to find. So suppose we have marked this, so this will be here, right? So here is the point will become the conjugate principal point, right? So in a stereo pair, identified principal point of a photograph can be located in the another image, right? This point is known as the conjugate principal point. I hope this is clear to you. So flight line can be determined by plotting the principal point and conjugate point in a line. So if you plot this, then this is the direction of the flight. ठीक है, तो ये आपका है conjugate principal point. नेक्स्ट टर्म हमारा है so the aerial photography में distortion. So the shift in the position of a landscape on a photograph that alerts the perspective characteristics of the image. So film and print shrinkage, that is negligible. Atmospheric refraction of the light rays, that is also negligible. Motion of the landscape features, that also we consider it is negligible because we are maintaining that speed. So the next is the lens distortion. तो ये हमारा distortion क्या है? The shift in the position of a landscape feature on a photograph that alerts the perspective characteristic of the image. तो हमारा जो shift है किसके में? Position of a landscape feature on a photograph that alerts the perspective characteristic of the image. So film and print shrinkage, it is negligible. Atmospheric refraction of the light rays, that is also negligible. Motion of the landscape feature, and then other term is your lens distortion. So lens distortion के केस में how they appear in the image, so you can see this particular area, right? हम एक particular area को देख रहे हैं, so you will find this curve. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको represent किया हुआ है, इस तरह का कर्व आपको दिखेगा, ठीक? So you can find you will find this curve effect, that is one example of this lens distortion. So here if you find to do some kind of a study, or if you want to find out the pixel size, they are different
across this image, right? So you cannot really use this lens distortion image. So let us understand in terms of principal point, isocenter and nadir how this lens distortion occur. ठीक है, देखो जब आपका लेंस डिस्टॉर्शन इस केस में दिखा रहा है, तो हियर इफ यू फाइंड want to do some kind of a study, or if you want to find out the pixel size, they are different across this image, right? So you cannot really use this lens distortion image. तो उसके लिए हम कुछ और सारे पॉइंट्स को समझते हैं. So here we have so this lens distortion actually radiates from the principle that you are familiar with this PP, principal point, right? And it causes landscape feature to appear either further away or closer to the principal point. Edges of the photograph are significantly affected. You remember my last slide, and distortion curve developed by the calibration of the lenses is used to avoid this particular error. ठीक है, तो it radiates from the principal point. तो जो लेंस डिस्टॉर्शन है उस केस में it radiates from the principal point. और इससे क्या होता है, it causes the landscape features to appear either further away or closer to the principal point, and the edges of a photograph are significantly affected, and the distortion curve developed by the calibration of the lens is allowed to avoid this kind of the error. ठीक है, तो ये है आपका लेंस डिस्टॉर्शन. ठीक, लेकिन अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है हमारा टिल्ट डिस्प्लेसमेंट. देखो, the displacement in the shift in the position of the landscape features that does not alter the perspective characteristic image. So here again curvature of the earth is negligible. यहाँ पे आपका जो curvature है अर्थ का वो negligible है. Tilt and topographic relief. So tilt displacement, it radiates from the isocenter of a photograph. So here this is the isocenter. It is caused by the aircraft not being perfectly horizontal at the time of the exposure of the film, right? If the amount of the tilt is known, photographs can be rectified. अगर हमको amount पता चल जाए tilt का, तो उसका जो भी problem है वो हम rectify कर सकते हैं. If we can determine the direction of the tilt in terms of upper side of the tilt and the lower side of the tilt, we can determine how the landscape feature are being displayed. ठीक, अगला जो हमारा स्लाइड है is about the topographic displacement. ठीक, so the topographic displacement, they radiate from the nadir of the photograph. Okay, so here we have nadir varies directly with the height of the landscape feature and varies directly with the radial distance from nadir to the top of the landscape feature. There will be no displacement at nadir because you are looking above. That varies inversely with the flying height, and when you have this, you can always generate 3D image. So the topographic displacement है, they radiate from the nadir. ठीक है, they radiate from the nadir of the photograph. So here we have nadir varies directly with the height of the landscape features and varies directly with the radial distance from the nadir to the top of the landscape feature. So there will be no displacement at nadir because you are looking above. That varies inversely with the flying height, and when you have this, you can always generate the 3D images. तो अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्रामेट्री, दैट इज स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पैरेलैक्स का. तो पैरेलैक्स से आप क्या समझते हैं, स्टीरियोस्कोपिक पैरेलैक्स से क्या समझते हो? So here the most important step is to determine the orientation of the photograph. एक फोटोग्राफ का ओरिएंटेशन डिटरमाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है. इन
general levels and annotations are placed towards the northern edge of the photograph. So if you see this image, this is the northern edge of this photograph. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक northern edge है, यहाँ पे you can see here the northern edge of this photograph. To confirm the orientation map can be defined for the reference. You can use some previous images or the map to reorient this if by mistake this has been wrongly put. So here actually what we are doing, we are going to do the overlapped aerial photography. ठीक है, so adjacent overlapping aerial photographs are called stereo pairs. उसको adjacent overlapping aerial photograph को हमने बोला था stereo pairs, and they are required to determine the parallax, okay, and 3D viewing. So here this is the ground, and here for the first position I have captured this particular area. देखो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैंने ये कुछ एरिया को कैप्चर किया है यहाँ पे, राइट. I have captured this area, this particular area. Now I have changed the position and then I have captured this position, this area. मैंने पोजीशन को चेंज किया और फिर मैंने ये एरिया को कैप्चर कर लिया with the same overlap, and then we can have the stereo pairs. Now for the 3D viewing, stereo pairs are required with approximately 60% end lap. उसमें कितना है end lap हमारा है 60%, 60% end lap and 20% to side and sorry 20 to 30% side lap. So if you have this, then only you can generate the 3D image of the particular area. ठीक है, अब जो दूसरा स्लाइड है, जहां पे स्टेरियोस्कोपिक पैरेलैक्स कैलकुलेशन के लिए what we have to do, we have to first identify the principal point, conjugate principal point, और उसके बाद we have to find out the flight direction, and then we calculate the stereoscopic parallax. So a step by step हमें समझना पड़ेगा. So stereo pairs must be oriented correctly, then locate the fiducial marks, principal point and nadir in each photograph. Locate the conjugate principal point and principal point in both the images. Draw the flight line, फिर उसके बाद हम flight now for the stereoscopic parallax calculation, what we have to do, we have to first identify the principal point, then we have to identify the conjugate point, and then we have to find out the direction of the flight, and then we calculate the stereoscopic parallax. तो एक बार स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक बार डिस्कवर करते हैं कि what we have to do. So stereo pairs must be oriented correctly, then locate the fiducial mark, principal point and nadir in each photograph. Locate, पहले तो stereo points को हम, it should be oriented correctly. Then locate the conjugate principal point, okay, and principal point in both the images. Draw the flight line by joining the lines between principal point and CPP. So PP is your principal point and CPP is your conjugate principal point. And align the photograph accordingly so that all the 4 points lies on the straight line. I will show you. If you have this, if you have a stereoscope, you can easily see the 3D using the stereo pairs, right? So the displacement of an object
caused by change in the position of observation is called parallax. When we are seeing from here, we'll see some features of this particular object. When we see from here, we'll see another side or the next information about the same target. And if we are changing the position, and when we have displacement of an object caused by a change in the position of observation, is called parallax. So stereoscopic parallax is caused by taking the photograph of the same object but from different point of the observation. So यहाँ पे एक slide है, if this is the line of flight, अगर हमारा ये line of flight है, यहाँ पे मैंने आपको show किया है, this is the line of flight. If you see, this is one object and how they appear when you are changing the location, right? Location of the observation. So they will appear differently, and here in this image, you can see only top here, and you can see this side, and in this image you can see this side, right? और देखो ये आपके पास एक line of flight है, and if you see, this is one object. यहाँ पे हमारे पास एक object है, right? And how they appear when you are changing the location, right? Location of the observation. So they will appear differently, and here in this image you can see only top here, you can see this side, and in this image you can see this side, right? So if you have this complete observation, assuming from here, here and here, here, so you can fully cover this area, right? And you can estimate the distances, these top and distance between bottom. So here in this case, you can see this bottom, so you can easily pinpoint it and you can take this distance. But here in this case, top and bottom both will be same, whereas in this one also top will be different, bottom will be different. So if you are having such information, you can always calculate top and bottom distance from a stereo pair. Now note the displacement between the top and base of this storage towers in this photo stereo pair. ठीक है, अगर हमारे पास see, now here we have PP, हमारे पास प्रिंसिपल पॉइंट है, CPP मतलब हमारे पास कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट है, and this is another CPP and PP. हमारे पास एक बार PP और CPP है और दूसरे में भी PP है, right? Once you have that, then you can easily calculate the absolute stereoscopic parallax, which is the average photo base length, which is average distance between PP and CPP. एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे where this base distance is different, यहाँ पे जो हमारा बेस डिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, टॉप डिस्टेंस हमारा डिफरेंट है, बोथ द इमेजेस, नन ऑफ देम वेयर वर्टिकल फोटोग्राफ, इसमें से दोनों इमेज हमारा वर्टिकल फोटोग्राफ नहीं है. When you have such images with you, you can always calculate the distance between these two, right? And you can always calculate the distance between the bottom and differential parallax. You can calculate using the difference between the stereoscopic parallax at the top and base of the object. So here the differential parallax equals to distance of the bottom minus distance of the top. So this is the differential parallax of your image of that particular object. ठीक है, तो differential parallax क्या आएगा, the difference between the stereoscopic parallax at the top and base of the object. So DP will be 15.2 mm minus 13.5 mm, and that will be equal to 1.7 mm. So how do we use this stereoscopic parallax in height estimation? Height estimation में कैसे हम use करेंगे? So once you have all this information, एक बार आपके पास सारा information मिल गया, you can always calculate what is the height of the object. So here in this equation, h is basically height of the object, which we want to calculate h dash. If flying height, that is known, then the differential parallax you can calculate using the previous method,
and P is the average photo base length, right? So this equation can be used to estimate the object height when you are having the stereoscopic parallax. So H equals to H dash into dp upon P plus dp, जहाँ पे आपका स्मॉल h है वो ऑब्जेक्ट हाइट है, एच डैश हमारा इस केस में फ्लाइंग हाइट है, और डीपी जो है वो हमारा डिफरेंशियल पैरालैक्स है। देखो इस केस में हमने डीपी को निकाला है, तो जो हमारा डिफरेंशियल पैरालैक्स निकल के आ रहा है वो है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेरियोस्कोपिक पैरालैक्स एट द टॉप एंड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। So at the top and the base of the object, you will get 15.2 mm minus 13.5 mm, and you will get the answer 1.7 mm. Very good. उसके बाद हमारे पास ये चीज आ गई, तो h की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, h डैश इंटू dp अपॉन p प्लस dp। तो हमारे पास डिफरेंशियल पैरालैक्स यहाँ 1.7 mm है, राइट, और p क्या है, इट इज एवरेज फोटो बेस लेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ से h डैश का वैल्यू पुट करके हाइट निकाल सकते हैं। So इसमें it is very useful for the estimation of the height using the stereoscopic parallax. So this is all about the photogrammetry, the different principles of the photogrammetry, different points, different scale. तो ये हमारा फोटोग्रामेट्री है। फोटोग्रामेट्री में बेसिकली हमने ये देखा कि ये एक साइंस है जिसका हम यूज करके हम फोटोग्राफ से उसका मेजरमेंट, उस ऑब्जेक्ट का, उस सरफेस का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये हमारा फोटोग्रामेट्री के बारे में था, ठीक है। तो दिस लेक्चर वाज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। So and we have covered all the parts in this lecture. So how we have done, we have divided into part 1, part 2, part 3. So part 1, part 2 and part 3 में बेसिकली हमने स्टार्ट किया part 1 से। part 1 में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि इसका डेफिनेशन क्या है, देन डेफिनेशन के बाद हम गए कि हमने ये चेक किया कि हमारे एरियल फोटोग्राफ्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, देन हमने हाई ऑब्लिक, लो ऑब्लिक के बारे में पढ़ा, देन हमने उसका स्केल देखा और स्केल का वेरिएशन भी चेकआउट किया, ठीक है। स्केल के वेरिएशन के बाद हम उसके बाद डिफरेंट टर्म्स पे गए, जैसे पीएसआर है, ओके, उसके बाद आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, हमने उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आउट किए। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज में पढ़ी वो था फिड्यूशियल मार्क्स, और फिड्यूशियल मार्क्स का यूज करके हमने 2-3 चीजें निकाली, जैसे प्रिंसिपल पॉइंट है, नादर पॉइंट है, आइसो सेंटर है, कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट है, देन डिस्टॉर्शन है, लेंस डिस्टॉर्शन है, राइट। उसके बाद हमने टिल्ट डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, टोपोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, देन स्टीरियोस्कोपिक, व्हाट इज स्टीरियोस्कोपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो एच कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर फोटोग्रामेट्री पार्ट। ये पूरी फोटोग्रामेट्री एक यूनिट है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की, जो कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरे लेक्चर में मेरे मिल जाएगा। You can easily go and check out my part 1, part 2 and part 3 lecture where you will get this photogrammetry part. I hope you all are enjoying this, and if you have any doubt you can directly write to me at ankur495@bit.ac.in. Then also you have some doubt, you can directly put your queries in this Dropbox, and I will love to just give the clarification of all the queries. So I hope you all are enjoying this. I hope everybody is safe in this pandemic and they are staying safe at their home and keep enjoying this video lectures, video contents of the different subjects. So thank you. Have a nice day and thank you for listening it very patiently. Thank you. God bless you all.